again I am back to my channel, and guys, today we are going to do the functions and the basics of 11th class. I have already covered all the basics of 11th class in the previous video, and the link of that video will be in the description box. So go and check the description box and watch that video also, so that you may be able to do 12th class function, because there are some connections between the 11th and 12th. So let's begin without wasting the time. So guys, in previous video I have told you that a function is nothing, just it is a special type of relation. Okay guys, so I have told you some condition that how a relation becomes a function. So first condition is this, that the set A, the elements inside a set A must have an image. I mean, consider this as a set A, and these all the elements must have an image, and that image must be unique. Okay guys, so these two are the conditions. And now guys, we are going to do 12th class function. So I am not going in deep, because I have already taught you all the topics in deep in 11th class basics video. Okay, so let's start without wasting the time. And guys, you are able to see this page fully, I think. What I have written on the right hand side of these pages, can anyone tell me what is this? Yeah guys, in 12th class we have two types of function: one function, many-one function, and onto function, into function. There are not two types, there are four types of function. Okay guys, so let's begin. So by seeing these examples, are you able to differentiate why it is written many-one function, why it is written one function, and somewhere it is written many-one, and somewhere it is written one? Can anyone tell me? No, I don't think, or somebody have already thought about that also, but no problem, I will explain you each and everything. So it is, so consider, if all the elements have unique pairing, then we can say it is a one function. So guys, before explaining this page, I am going to give the definition of these functions. So guys, one function, its another name is injective or injection. Okay, injective function or injection. A function f such that it is defined from A to B, set A to set B, is said to be a one function if different elements of A have different images. Is it clear? Different elements of set A have different images in B. Okay guys, now we are going to do many-one function. A function f such that is defined from A to B is said to be many-one function if two or more elements of set A have same images in B. Okay guys, now we are going to do onto function. Guys, onto function, another name is surjective function or surjection. And if range becomes equal to the codomain, then it is a onto function. If not, then it is not a codomain function, then it will be, it is not an onto function, it will be into function. Okay, if range is a subset of codomain, then it becomes an into function. So guys, up to here I think it is clear, and now I am going to tell you कैसे वो अपन ने लिखा मैनी वन फंक्शन. अब डीपली जाएंगे अपन, ठीक है. तो गाइस, अब आ जाओ, क्या है डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए इफ इट हैव ए, अगर किसी मतलब जो एलिमेंट ये सेट ए में है उनकी इमेज अगर अलग अलग है तो वन है, और अगर उनमें से अगर दो या तीन की कोई एक इमेज है तो मैनी वन है. देखो, एक से रिलेटेड हो है, दो से मतलब दो की एक इमेज और एक की एक इमेज, मतलब ये मैनी वन फंक्शन. और देखना 1, 1, 2, 2, 3, 3. 1 क्यों डिफरेंट इमेजेस है ना सबकी अलग अलग, यहाँ पे इमेज सेम हो रही है ना, बस वही कारण है. अब अपन तीसरे एग्जांपल पर आते हैं. ये एक मैनी वन फंक्शन क्यों, देखो 1, 1, 2, 1, 3, 3, मतलब मैनी आर रिलेटेड विद 1, मतलब
तीनों एलिमेंट्स की एक ही इमेज तो मैनी वन फंक्शन हो गए, सीधी सी बात है। अब उसके बाद अपन आ जाते हैं अपने लास्ट 2 एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। तो लास्ट 2 एग्जाम्पल्स क्या है ये देखो। अब ये 1,2, 2,2, 3,3, 3,2 मतलब many are related with 1, then we can say it is a many one function. And now 1,2 by 1,5, 2,6, 3,7, and we know if different elements have different images, then we can say it is a one function. So it is clear. Now guys, can anyone tell me whether it is an into function or an onto function? Tell me guys. कोडोमेन क्या है इसका 5, 6, 7, ओके, एंड रेंज 5, 6, 7, oh shit, it means that range becomes equals to codomain, then it is a onto function. So and onto function, it is an onto function. So ये एक onto function है, ठीक है गाइस। और ये देखिए अभी ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि रेंज कोडोमेन के बराबर हो गई। अब इसको देखते हैं इसके कोडोमेन में क्या है 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4 कोडोमेन है। अब सुनो कोडोमेन, अब रेंज देखना 2 अकेली, तो यार रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन आ रहा है यहाँ, देन वी कैन से दैट इट इज इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। हाँ, और जो 1 फंक्शन इनको अपन और क्या बोल सकते हैं, इंटरजेक्शन और इंटरजेक्शन नहीं, इंजेक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है गाइस, इंजेक्टिव या इंजेक्शन फंक्शन, ठीक है गाइस। इंजेक्टिव और इंजेक्शन में लिख नहीं रहा हूं, जगह कम है वो, ठीक है। ये बताओ क्या है, ये इनटू फंक्शन, ये भी इनटू फंक्शन है गाइस। आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ऑन टू हो, क्यों यार, इसमें रेंज क्या आ रहा है 1, 2, 3, 4, और कोडोमेन में क्या आ रहा है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, आई थिंक, सॉरी। अब आई थिंक यू आर एबल टू सी, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, and in this question I have told you that it is a non-into function. The reason is that the range is 1, 2, 3, but codomain is 1, 2, 3, 4. As the range is a subset of codomain, so we can say that it is an into function. Then just come to this question, and I will tell you whether it is an into function. Because guys, range is not equals to codomain. You can see 1, 2, 3, 4 it is range, and 1, 2, 3 is the range, and 1, 2, 3, 4 is the codomain. Then we can say that the range is a subset of codomain. Then it is not an onto function, but it is an into function. Okay guys, so it is clear now. And now we are moving to our next topic, that is bijection. Guys, if injective plus surjective gives bijection, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव गिव्स, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव अपन को बाइजेक्शन देते हैं। अब गाइस पहली बात तो ये, आपको याद है कि नहीं इंजेक्टिव क्या होते हैं और सर्जेक्टिव क्या होते हैं? आई थिंक आपको अभी याद नहीं होंगे, मैं बताता हूँ फिर भी, ठीक है। सो गाइस, मैंने बताया था कि इंजेक्टिव और इंजेक्शन वन फंक्शन होते हैं, और सर्जेक्टिव और सर्जेक्शन ऑन टू फंक्शन होते हैं। अगर वन फंक्शन प्लस ऑन टू फंक्शन दोनों आ रहे हैं तो वो बाइजेक्शन कहलाता है। इसका एग्जांपल ये है, देखो 1, 2, 3, 4 सेट ए में है, और 4, 5, 6, 7, 8 ये बी में। अभी पहले तो देखो ये 1 है कह रहे हैं, हाँ है, डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट इमेजेस, ठीक है, तो पहला प्रूफ हो गया 1 फंक्शन। दूसरा देखेंगे कि ये अपना ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। ऑन टू फंक्शन के लिए अपन को क्या चाहिए, ऑन टू फंक्शन के लिए अपन को चाहिए रेंज कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। रेंज कोडोमेन के बराबर होगी, कैसे बताता हूँ, 5, 6, 7, 8 कोडोमेन में रेंज भी 5, 6, 7, 8 है। वाओ, व्हाट अ नाइस एग्जाम्पल, मतलब कोडोमेन के बराबर आ गई। क्या चाहिए, अब ऑन टू भी है, 1 भी है, ऑन टू भी है, 1 भी है, तो इसको अपन बाइजेक्शन बोल सकते हैं। इसको भी दो नाम है, बाइजेक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। सॉरी, फंक्शन यहाँ नहीं आता, बाइजेक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। सो गाइस, वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक. So guys, I am going to recall these modulus function, different functions of class 11th, chapter 2. Okay guys, so I am going to recall you this. I am not only recalling, मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि आपने क्या क्या फंक्शंस पढ़े थे अपनी काय में 11th क्लास में 11th, ठीक है।
ठीक है। सो ये तो विक्ट्री हो गई, ये 11th हुआ और TH यहाँ लगाना पड़ेगी ऊपर से, ठीक है। सो अपन स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन से। गाइस ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स लिखा नहीं है मैंने, सो मैनेज करना, ठीक है। सो वी नो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, देन इट्स कंडीशन इज लाइक दैट, प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स such that x is greater than equal to 0 or minus x such that x is less than 0, not equal to here. It is like this, x such that x is greater than or equal to 0. I think visibility little bit there is a problem. Wait guys, wait, let me adjust my camera so that you will be able to see it much more clearly. Okay, so if x is positive then it is a greater than or equal to, x is negative then it will be less than 0. Is that clear? And I think you know the graph of this modulus function. It will be like this, and I am not going to make this graph again with the use of points because you know how to make it. And we are going to talk about the domain, range and codomain of this modulus function. Domain will be range obviously, yeah guys. Then codomain, that is also a real numbers, okay, real numbers. And what about range? Can anyone tell me? Yeah, just think for a second. 5 4 3 2 1. Guys, your time is up. The range will be 0 comma infinity. Why? The reason is that, simply the clear reason, when we are putting a negative number inside a modulus, we get only positive number. And if we are putting negative 0, but actually we don't want to write this, ऐसा कभी लिखते नहीं है, but आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं. और modulus of 0 is 0. So we can say that this is like that, 0 comma infinity. Yeah, all positive real numbers including 0. Okay, now we are moving to a constant function. And f is defined from R to R such that f of x equals to k. और ये अपना वीक का लास्ट फंक्शन है, इसके बाद अदर फंक्शन में नेक्स्ट वीडियो में आपको रिकॉल कराऊंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, दिस इज द ग्राफ, लेट्स स्टार्ट ना, लेट्स एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस इज द ग्राफ एंड y इज इक्वल्स टू k, इट विल बी इक्वेशन एंड इट इज ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस. दिस इज एन x एक्सिस, then this will be a y axis. And what will be the domain, range and codomain, you will have to think about that. And मैं यही सेशन एंड कर रहा हूँ और आपको सोचना है कि इसका डोमेन क्या होगा. डोमेन सीधी से रियल होगा, रियल नंबर होगा. क्यों? पीछे अपन ने देखा ना, उसमें क्या लिखा है, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम R to R, मतलब ये हो गया अपना सेट, ये सेट मतलब ये अपना डोमेन वाला सेट, और रेंज और कोडोमेन वाला सेट. रेंज बताना है मुझे, तो मैं सीधी सी बात है, सोच के रखना क्या होगी रेंज, ठीक है गाइस. तो thanks for watching the video and bye bye.